maximum Desi, Dhol and Diaspora Dhamaal. Dizzy, delirious Desis turn out in numbers to see Prime Minister Narendra Modi. This is PM Modi's second big Desi night in Europe. Bharat Pyar on grand display at Copenhagen. भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है. The Prime Minister's Sabka Saath pitch in Denmark. सबका साथ, सबका और सबका. अब देखिए घर घर बात पहुंच चुकी है. PM Modi's Euro dash is a top focus on India First. So the Prime Minister of Denmark, she came to the airport to receive Prime Minister Narendra Modi. She also accompanied the Prime Minister for his Diaspora event. There are two aspects to this very important second leg of Prime Minister Narendra Modi's visit to Europe. You remember part one, we discussed Germany in great detail yesterday. Denmark equally important, and not just because of the Indo-Nordic summit that will happen tomorrow, but the big outreach to the diaspora. One aspect, clean energy, green energy, India's green revolution, as the Prime Minister put it. That's the second aspect, and over the course of the next half hour, we'll talk about it in greater detail. I'm Gaurav Sawant. As always, let's get started with the headlines on India First. On Eid, communal clashes erupt once again in Rajasthan. Violence in Jodhpur, stone pelting in Nagaur. Rajasthan Chief Minister says violence triggered by rumours, blames BJP. Political showdown escalates over Rahul Gandhi's viral Kathmandu nightclub party video. BJP labels him a party time neta. Congress hits back, says the BJP should mind its own business. The loudspeaker debate gets louder. Maharashtra, Navnirman Sena Chief Raj Thackeray booked for inflammatory speech in Aurangabad. FIR also lodged against rally organizers. Security strengthened at the MNS Chief's residence. Union Home Minister Amit Shah is in Karnataka amid a cabinet rejig speculation ahead of the crucial 2023 elections. Chief Minister Basavaraj Bommai will hold a dinner meet with Shah. Superstar language war escalates. Chiranjeevi says he felt insulted and humiliated when Hindi cinema was called Indian cinema. The actor credits Bahubali and RRR for breaking the barrier. Prime Minister Narendra Modi is in Denmark, in Copenhagen. Let's just cut across and take a look at the latest images that are coming in. Prime Minister interacting with a large crowd. He also played a dhol. He was vibing with Danish drummers. Excited expats turned up in large numbers to listen in to Prime Minister Narendra Modi. Before I get you more, dip in, listen in to the Prime Minister playing the drums.
And the Indians in Denmark are very excited. In fact, not just Indians who live in Denmark, but there were several who'd come from Norway and Sweden and Finland to listen to Prime Minister Narendra Modi. And before we get you more on what the Prime Minister said, let's listen into reactions. India Today's Anjana Om Kashyap. She spoke to a number of people who were very excited. They were seeing the Prime Minister for the first time. They heard him for the first time. Let's get you those reactions quickly. Yes, Gaurav, indeed, very excited is the Indian diaspora here at Copenhagen and see all these placards that they got and Modi. If you want to talk to them, 1 or 2 line answers you will get, and after that it's Modi, Modi chanting for them, right? But आप बताइए, आप सुनाने वाले थे? Yes. So actually, एक कविता है जो मोदी जी ने 75th इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले से बोली थी कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, चारों तरफ देशभक्ति है, मोदी तुम तिरंगा लहरा दो, भारत का भाग्य फहरा दो, हर हर मोदी, हर हर मोदी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। मोदी जी की जो सादगी है, इतने डाउन टू अर्थ पर्सन है। He gave a task to all of you, right? He said you have to send 5 भेजेंगे, 50 लोग भेजेंगे, 5 नहीं ज्यादा भेजेंगे। 50 भेजेंगे आप? Your experience? It was very nice. It was very, very nice. Very enjoyable. कैसा लगा पीएम का भाषण? उनका भाषण हमेशा दिल को छू जाता है। हाँ, हमेशा आप लोग इधर आइए, आगे आइए। भाषण सुनने के बाद अब कैसा जोश है? एकदम वाइब्रेशन पूरा अलग ही है। डेनमार्क अलग ही वाइब्स में चल रहा है अभी, और ऐसा मोमेंट डेनमार्क में पहले नहीं देखा। मैं ग्रीन एनर्जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि ये सब इन्होंने सबके सामने बोला है, क्योंकि ये इतनी जरूरी चीज है हमारी लाइफस्टाइल सुधारना। इट्स सो इम्पोर्टेंट हमारे लिए, सबके लिए। आप लोग कितने खुश हुए? बहुत अच्छा लगा। इतनी खुशी आई थिंक कभी नहीं हुई है, और एक अलग एनर्जी थी रूम में, और उनको देख के आई थिंक आज तो बहुत मजा आ गया। मोदी है तो मुमकिन है। बीच में पीएम बोल रहे थे उस समय भी ये नारा लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नीचे हम पूरे डिसिप्लिन में थे, बट हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे उनसे मिलने के लिए। रोक नहीं पा रहे थे हम लोग। मोदी का ऑरा ही ऐसा है कि हम लोग रोक नहीं पा रहे थे अपने आप को। जो वो बता रहे थे हमें, वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर आप लोगों ने भी दिखाया था जो लिखे थे, लेकर आप लोग प्लकार्ड। खुश हुए? पीएम की बात कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। पीएम ने टास्क दिया है कि 5 लोगों को भारत को विजिट करने के लिए आपको करना है। ये चीज पहले से हमारे दिमाग में है, जरूर करना है। तिरंगा भी आपने बनाया हुआ था आज गाल पे। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज ए इंडियन। आप लोगों को भाषण कैसा लगा? मोदी जी का भाषण हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात लगी, उसने हमारी नेशनल लैंग्वेज में बात की और बिल्कुल सादगी से और बहुत अच्छे ढंग से। सभी को उनके ऊपर हम बहुत प्राउड है। चलिए यहाँ पे जो लोग हैं जल्दी से उनसे बात करते हैं। आप लोग बताइए कैसा लगा? इट्स अमेजिंग, वंडरफुल स्पीच। मोदी जी इज द बेस्ट। बड़ी बात क्या लगी जो पीएम ने बोला उसमें? टूरिज्म अट्रैक्टिंग दी एनआरआई कम्युनिटी एंड 5 लोगों को भेजेंगे ना इंडिया? काम कर चुके हैं। मैं बहुत सारे मेरे कोलिग्स को बोल चुकी हूँ कि इंडिया जाओ, कि बहुत सारी जगह है, अच्छे जगह है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, सारे पूरे कर लो टूरिज्म। इंडिया बहुत अच्छा है। हम ऑलरेडी इस हिस्से में चलते हैं। जिन लोगों ने आज परफॉर्म यहाँ पर किया है वो अलग वेशभूषा में। यहाँ पे जब पीएम ने बंगाल की बात की थी तो सबसे ज्यादा आप लोगों ने यहाँ से आवाज की थी। आइए जल्दी आइए आगे। क्योंकि हम लोग बंगाल से हैं एंड we are celebrating 10 years of Durga Puja this year. So 10 साल लगे हैं हम लोगों को ये पूरा सेटअप करने में, और ये बच्चों ने किया है। रूफटॉप के बच्चों ने ये सब किया है हैंड प्रिंट से। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। इट वॉज अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, पंडित नेहरू के बाद पहली बार यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क में आए हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी और मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच में जो देशों की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, इट वॉज अमेजिंग बिकॉज वी आर गोना रॉक द वर्ल्ड विद दिस। इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस, ऑल ऑफ अस, एंड वी लव मोदी, एंड उन्होंने हमारे अंदर देशभक्ति की जो भावना भरी हुई है उसको और बढ़ाया है। So, इंडिया ने जो कोविड वैक्सीन्स में जो काम किया है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज आउटस्टैंडिंग। अगर इंडिया में इतना कोविड वैक्सीन पूरे यूरोप को कवर कर सकता है, दैट इज व्हाट इंडिया हैज प्रूव्ड एंड वी आर प्राउड ऑफ इट।
So Gaurav, that's the Indian diaspora for you, huh? You can see their smiling faces. They're absolutely impressed with the conversation or the dialogue or the speech, you can call it anything. But the way he connected with the Indian diaspora and their responses are clearly one of great excitement, hope and better relations between the two countries and a sense of nationalism seeping into them through the entire speech that he gave here, Gaurav. Anjana, thank you very much. So this is the second leg of the Prime Minister's visit. People were equally excited, if not more, in Berlin, in Germany, where the Prime Minister spoke about India's achievements so far. Today, it was more about environment, clean energy, the hardworking Indian people. Wherever they go across the world, those countries really appreciate Indian workers, the Indian workforce, because they're hardworking, very disciplined, and they actually help the economy of the country that they are in. Of course, apart from helping the economy of India. But there was a compliment that came India's way, even from the Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen. Prime Minister Narendra Modi arrived in Copenhagen. He got a rousing reception. This was Prime Minister Narendra Modi's first visit to Denmark. So let's now get you some of the viral moments of the Prime Minister's visit. Let's begin with the Prime Minister's love for playing the Dhol. It was on full display as he addressed the Indian diaspora. As you can see in these images, and we've been playing these quite a bit, with the tricolour flying behind him, the Prime Minister joined in the celebrations of the Indian culture. So the Prime Minister was swarmed by fans. We'll show you those images. They were all trying to take a selfie with the Prime Minister. He gave some autographs. This as he concludes one part of his Copenhagen trip. Of course, it's the Indo-Nordic Summit tomorrow, extremely crucial. But watch how people tried to shake hands with the Prime Minister and tried to take his autograph. Let's now get you the next image. Prime Minister Narendra Modi and the Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, they greeted the Indian community after this meeting with the business leaders. Now, expat Indians were heard not just chanting the Prime Minister's name and Vande Mataram, but the Prime Minister of Denmark, she said the people actually knew really well how to welcome and greet a politician, and she asked the Indians to teach this to voters and people in Denmark. The Prime Minister of Denmark gave a tour of her residence to Prime Minister Narendra Modi. She also showed him a Patchitra painting from Odisha, which was presented to her by Prime Minister Narendra Modi during her last visit to India. And incidentally, that's that picture, that painting behind the two, and that depicts the Sri Ram Darbar. Of course, the highlight of Prime Minister Narendra Modi's tour to Europe so far has been his connect with the diaspora. When he was leaving his hotel in Berlin, the Prime Minister interacted with a young Indian, and these images are now viral. Oh wow. Oh wow. Denmark is a part of India's journey in this green revolution, Prime Minister Narendra Modi said. He spoke about renewable energy,
sustainable development from shipping to ports. The Prime Minister spoke of waste to wealth. He spoke of green shipping, science, technology, innovation. He actually outlined India's achievements and goals in the 75th year of India's independence. He also gave a new slogan to the diaspora, Chalo India, asking the diaspora to encourage 5 friends every year to visit India. Let's listen into some of the highlights of what the Prime Minister said. अनेक बार जब मेरी वर्ल्ड लीडर से मुलाकात होती है तो अपने देशों में बसे भारतीय समुदाय की उपलब्धियों के बारे में मुझे बड़े गर्व से बताते हैं। वे इंडियन कम्युनिटी के परिश्रम और शांतिपूर्ण नेचर की सराहना करते थकते नहीं है और इसके लिए धन्यवाद का हकदार मैं नहीं, आप सब है। साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को अगर मिला लिया जाए तो उनकी संख्या कई देशों की आबादी से अधिक होगी। उनका पहनावा, खान पान भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी सोशल हार्मनी, वननेस और को एग्जिस्टेंस की जो वैल्यूज सभी भारतीयों में एक समान है और यही हमारी ताकत है। और जिनकी रूट्स किसी भी तरह मां भारती से जुड़ी हैं, वे स्वाभाविक तरह से लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान रखते ही हैं। एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को दवाइयां भेजी हैं ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह जाएं, दुनिया को संकट के समय मदद करें, ये सपना लेकर के काम करते रहे। साथियों, आज भारत जो कुछ भी हासिल कर रहा है, वो उपलब्धि सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि वो करीब 1/5 ह्यूमैनिटी की उपलब्धि है कि अगर भारत में हम वैक्सीनेशन को हर परिवार तक नहीं पहुंचा पाते तो उसका दुनिया पर क्या असर होता। अगर भारत मेड इन इंडिया सस्ती और प्रभावी वैक्सीन पर काम न करता, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन न करता, तो दुनिया के अनेक देशों की स्थिति क्या होती। मौत कब आकर के धमकेगी, परिवार में कौन मुसीबत में फंस जाएगा, बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, उस समय संकट के बादल घिरे हुए थे, चिंताएं चारों तरफ फैली हुई थी। उस समय भारत का नौजवान, उस स्थिति को याद कीजिए दोस्तों, भारत का नौजवान करीब करीब हर महीने एक यूनिकॉर्न बना रहा था। - 2021 में तो ये स्पीड और बढ़ गई और 8-10 दिन में ही वो यूनिकॉर्न बनाने लग गया। और इस साल के शुरुआती 2022 के शुरुआती 3 महीने में तो हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न भारत में तैयार हुआ।
75 मंथ्स पहले की बात मैं कर रहा हूं, हमने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। तब स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में दुनिया में भारत की कोई गिनती ही नहीं थी, नाम कहीं उल्लेख ही नहीं होता था। आज हम यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में नंबर 3 पर खड़े हैं। आज स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम हिंदुस्तान है। जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की थी तो कुछ लोग कई तरह के सवाल उठाते थे। हिंदुस्तान में डिजिटल 5-6 साल पहले हम पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक थे। ये मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल पहले। लेकिन आज स्थिति एकदम से बदल गई है। अनेक बड़े देश मिलकर जितना पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा हम भारत में करते हैं। What's happening back home in India is a cause for grave concern. After clashes on the night before Eid, Rajasthan's Jodhpur witnessed fresh violence today. After the morning Eid prayers, a mob was seen raising religious slogans and then clashing with the police. The mob also pelted stones at the police at the Jalori gate in Jodhpur, compelling the police to resort to lathi charge. To maintain law and order, curfew has now been imposed in several localities. But there are grave allegations that are being leveled against the Ashok Gehlot government in Rajasthan of not waking up in time to take adequate measures to stop this violence. Communal tensions grip another Rajasthan city. After Karoli violence, this time it's Jodhpur that's simmering. It all started on Monday night when a mob allegedly tried to remove Hindu flags from the freedom fighter Bal Mukund Bitsa statue for Eid celebrations. The claim is that black tapes were put on the statue. As the news spread, the other side soon landed at the spot and removed the Muslim flag. Loudspeakers were also removed from the spot. It triggered a brawl which soon turned into violent clashes with stone pelting between the two community groups. The police intervened but struggled to contain the communal tension. Reinforcements were called in and the police resorted to a lathi charge, even using tear gas to control the warring mobs. On Tuesday, after Eid prayers, a mob chanting Allahu Akbar faced off with the police, attacking several police personnel. CCTV images accessed by India Today capture miscreants wielding swords, sticks, lathis and stones. The mob also vandalized and torched vehicles. The police once again launched a crackdown on these antisocial elements and resorted to a lathi charge. यहाँ से जालूगढ़ से पत्थर मारते हुए आ रहे थे और यहाँ पे पुलिस वालों को मारा उन्होंने। 2 पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको मारा। जब उन्होंने वापस वहाँ पे टेलीफोन किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजी, इस तरह से हो रहा है, उसके 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई। उसके पहले कोई नहीं आया और सब पत्थर मारते हुए निकल सके। भगवान झंडे को हटाकर उन्होंने अपना झंडा लगाया विशेष समुदाय का और मूर्ति पर काले कपड़े बांध दिए गए थे। उससे कुछ लोगों में रोष उत्पन्न हुआ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Some of the miscreants were also held by the police. The Jodhpur Commissioner of Police has assured people that the situation for now is under control and under curfew. हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको
ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है जो जिस पे कानून के खिलाफ है उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मैं यही अपील करूंगा सभी को शांति बनाए रखें। The Allahu Akbar slogans were met with Hanuman Chalisa chants when an angry group staged a counter protest against the violence. इधर एक कम्युनिटी के लोग हैं और पुलिस ने इनको रोक रखा है और इधर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको पुलिस रोक रही है। आपस में पत्थरबाजी भी हो रही है और गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई है। इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, ये सब लोग पुलिस से भारी मशक्कत कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय मैं बताना चाहूंगा कि ये उपद्रवियों ने एक कार को तोड़ा है। इधर दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो वो नारे लगा रहे हैं, इधर अशोक गहलोत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। कुल मिलाकर तनाव है। Keeping in mind the grim situation in the district, curfew has been imposed in 10 thanas of Jodhpur till the 4th of May midnight. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot is also keeping a close watch on the situation and has urged everyone to maintain peace. मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। Will this communal flare-up hit the prospects of the Gehlot government in the run-up to next year's assembly elections? From Karoli to Jodhpur, where will it happen next? Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot had been holding deliberations with senior police officials in state capital Jaipur, and the situation, as you can witness right now, is there is an uneasy calm which currently prevails in Jodhpur, and senior officials from the district police and administration are keeping a watch. With camera person Nikhil Sharma and Ashok Sharma, Devankur Vadhavan in Jodhpur for India Today. Violence and riots are a cause for grave concern. We will continue to track developments on the story closely. But that is all I have time for on India First this evening.